सारे के सारे। सो यार आज एक खुरापाती चीज़ करने का मन कर रहा है, तो बहुत से चैनल्स ये वीडियो डाल रहे हैं कि यार क्या रॉयल एनफील्ड पॉपकॉर्न बना पाएगी ना बना पाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास पॉपकॉर्न सीट्स हैं, तो करना कुछ नहीं है, अपना देखते हैं कि आज रॉयल एनफील्ड साइलेंसर में से पॉपकॉर्न निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कुछ नहीं, मैं इन सीट्स को साइलेंसर के अंदर डालूंगा, देखूंगा, थोड़ा सा इस बाइक को चला के देखते हैं, इसको गर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि यार सीट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलते हैं बाहर, इसको थोड़ा भगाते हैं, थोड़ी देर तक इसको चालू करके रखेंगे और फिर देखेंगे कि यार पॉपकॉर्न निकलते हैं साइलेंसर में से या नहीं निकलते। तो ये जो साइलेंसर है वो शार्क साइलेंसर है, और मेरे को लगता है कि यार KTM बाइक में ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, जस्ट बिकॉज जो KTM का साइलेंसर अगर लोग लगवाते हैं आफ्टर मार्केट तो उनका साइलेंसर ऐसे होता है, तो उनका जो बेंड पाइप है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें जाके पॉपकॉर्न निकलते हैं। बट देखते हैं, इसका जो बेंड पाइप है वो सीधा है, बट लेट्स सी, आई होप कि ये कर पाएगी, जस्ट बिकॉज बुलेट फेमस है अपने इंजन गर्म होने से, और 350cc है। तो देखते हैं, एंजॉय करना वीडियो को, एक फन वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. I wanna see
गाइस यार बड़ा सही इंजन है यार रॉयल एनफील्ड का, तो आप देख सकते हो। अभी तो मैंने ज़्यादा देर तक रखा नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये धीरे धीरे करके सारे निकल रहे थे। फिर मैंने थ्रॉटल दिया तो काफ़ी जो सीट्स हैं वो अभी हो रहे थे, जैसे ये वाला है, ये अभी होने वाला था। तो यार बढ़िया है यार, काफ़ी मज़ा आया इस चीज़ को ट्राई करने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से।